So today we will discuss about the surgical affection of male reproductive system. There is a long list of this surgical affection of male reproductive system, but few surgical affection we will discuss today. So before going in detail, first we refresh your anatomical structure or anatomy of this male reproductive system. So if you see here, this one is the testicle, epididymis, spermatic cord, then this one inguinal canal, then this one is vas deferens that ultimately connected into urethra and urinary bladder, and this urethra is starting from the neck of the urinary bladder and it comes to the tip, right? And this one is, in case of dog, this one is prostate. So any complication, and that complication is not sought out by the medicinal therapy, we call surgical affection. Surgery is required or intervention, some tissue intervention is required in that case. तो सपोज ये यदि यूरेथ्रा का हम देखें या प्रोस्टेट का स्टार्ट करें तो प्रोस्टेट है, दिस वन इज नॉर्मल प्रोस्टेट. यदि प्रोस्टेट बड़ा हो जाए, इनलार्ज हो जाए, देन this one is rectum and this one is urinary bladder. If this prostate get enlarged like this, then what problem animal will face? It will compress the rectum, so animal will find difficulty in passing the feces. It will also compress the lumen of the urethra, so animal is find difficulty in passing the urine. Okay. Suppose this urethra lumen is starting from here and it will open at the tip. And if due to any traumatic injury or due to any congenital abnormalities, this lumen of the urethra, in spite of opening at the tip, it open anywhere other than this tip, then that is also abnormalities that we need to do correction by surgical intervention. And this dog penis is also having a os penis. If there is a fracture of the os penis, so what happens? Os penis is just act os penis is provide a tunnel on the ventral aspect for this urethra. So what happens if in the tunnel at certain point there is a tunnel get collapsed? What happens? Vehicle will not able to cross through that tunnel. If you connect these things with this case, then what happens? If there is a fracture of the os penis, then this penis is not maintained proper alignment. It will get somewhat down, and this urethra get kinked over here, and animal find difficulty in passing the urine. So one type of that affection also. Suppose this penis is not, this prepuce is somewhat abnormal and this penis is not able to protrude out, then also we need to intervene something. So that is some other condition. Next, this penis is protruded out through the prepuce, but it is not retracted back in the prepucial sheath. So that is also one condition. So one by one we, and suppose there is a tumor in the testicle, then again we have to intervene. So there are at different places or if different structure get affected that hamper the normal physiology of the animal, then we need to diagnose the condition and we try to properly manage that condition by first with the help of medicinal. If medicine is not working or that problem is not solved permanently with the medication, then we go for surgical intervention.
So phimosis. Phimosis is a condition in which the animal is not able to protrude the penis outside of this sheath. So if the problem is, if you diagnose that the problem is existing at the tip, that means preputial opening is very narrow. So what we have to do is we have to do reconstructive surgery and we make the incision wider and to make the this opening wider we put the incision and and we apply suture from mucosa to skin to widen the lumen or the tip of the prepuce or preputial opening. So it becomes normal. Suppose it is somewhat too narrow, then in this case, suppose a very minor opening is there, then in this case we have to make the circumferential incision, and after making the circumferential incision we have to suture this mucosa part with the skin in a simple continuous manner or simple interacted manner, whatever. In this way we can make the opening. If the problem is this phimosis is related with the problem of congenital problem in tip of the prepuce. So next one is a paraphimosis, just opposite to phimosis, that is a paraphimosis. Here the penis is protruded outside but not get back inside the seat. So sometimes it happens due to folding of the preputial sheath. So simply by unfolding the preputial sheath, you can able to solve this issue. And sometimes it protruded outside. So in this case, we need to lengthen the preputial sheath. For lengthening of the preputial sheath, what we have to do here is, suppose this one is a case of paraphimosis and that is not get resolved with any medication. In this case, what we do here, we just put marking, crescent sepet marking, and that you put incision on the skin and subcutaneous tissue and remove this flap, this crescent flap, and pull this, this one skin and put note or ligature with the adjacent skin so that it will slightly move cranial like this, and just you try to pull it and check whether it solve your purpose or not. If it is not possible, then further you may go cranial. So this kind of reconstructive surgery we can perform for this condition. Same procedure I am showing here. Crescent surface incision, then just pull it and tie. Next one is hypospadia. Hypospadia, normal. सर 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 हाँ जी, सर ये इसको मतलब कि प्रीप्यूस को पूरे क्रेनियली कर लेंगे पूरा, और उसके बाद सर इसको मतलब कि स्किन से मतलब कि सुचर कर देंगे। नहीं नहीं, आप ये देखो, ये पेनिस प्रोट्रूडेड है, इसको हमें शीत के अंदर लेना है, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया कि इस स्किन फोल्ड को यहाँ पे इसको पहले पुल करके देखा कि पुल करेंगे तो ये पीछे जाएगा ना, पेनिस पार्ट पीछे जाएगा, प्रोट्रूस थोड़ा आगे आएगा। यस सर। तो इसको यहाँ से ना स्किन को पहले मैंने पुल करके चेक कर लिया कि कितना पुल होने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। उसको पुल करके आप मेजर कर लो एंड क्रेसेंट सेपरेट इंसिजन लगाओ, और ये जो पार्ट है ना स्किन का, इसको आप हटा दो काट के, ओके। यस सर।
remove it, Yes, sir. and after removing, just you apply simple interrupted suture from this part of your skin to this part of the skin like this. सेम फोटोग्राफ में देखो ये है, और स्किन फ्लैप हटाने के बाद पुल करने के बाद देखो ये ऑलमोस्ट इट गेट करेक्टेड. ठीक Yes, है. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या करते हैं ना, ये ऐसे इंसिजन लगाया, इसको फिर आप ऐसे इंसिजन लगाया, और ये पार्ट जो है ना इसको आप हटा देंगे. ठीक है, तो ये गैप होगा, Yes, sir. और इस स्किन को पुल करके यहाँ ले आएंगे, स्टिच लगा देंगे, तो ये प्रिप्यूस को भी पुल कर लेगा. ठीक है, दैट इज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. ये समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट में हाइपोस्पेडिया. हाइपोस्पेडिया में मैं ये बोल रहा था कि नॉर्मली यूरेथ्रा is started from the neck of the bladder and it will open at the tip of the penis. Okay, but due to some congenital problem or due to any traumatic injury, if this urethra opens any other places, okay, other than this tip of the urethral opening, time is out, बता रहा है 10 मिनट. So that is called hypospadia. Means urethra is open ventrally or caudal to the normal orifice. ठीक है, यदि urethral opening ventrally होगा तो how we can identify, because normal जब यूरिन पास करेगा ये एनिमल ना, it will not come in a stream. ठीक है, वेंट्रल होगा तो it will not in a straight line, it will drop through the prepuce. So by seeing that problem, we can further examine the animal and see whether it is at the this urethral opening is on the ventral aspect or somewhere in the distal part. So if it is on the ventral aspect, then simply we enlarge the opening by doing some reconstructive surgery, and animal can able to pass this urine normal after doing this. So that condition is called hypospadia. So sometimes we used to ask question, the urethra opens ventrally or caudally. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Then next one is a persistent frenulum. That is sometimes this fibrous band is present at the tip of the penis, and it will attach with the prepuce, internal prepuce, and the the penis get folded or remain in the folded condition when you take it outside of prepuce. So that is called persistent frenulum, and in this case simply we incise or this amputate this frenulum part, and it will get corrected. The next one is a priapism. Priapism is a condition in which there is a penis always remain in the erected position without any sexual excitement. So that in that situation we use the term priapism. Then phallopexy. Phallopexy, it is sometimes if there is a paraphimosis is there and we can not able to manage this paraphimosis by lengthening the prepucial length or by stretching the prepuce, okay, then in that situation we do some phallopexy to prevent the penile part with the outside injury by the outside of the environment. Suppose if it is a like this much length is there, and in spite of doing this prepucial length, this penile part is not able to retract back in the prepuce, then what we do?
we do some phallopexy. Phallopexy का मतलब होता है कि what we do here is we create a surgical condition in which this penis is completely adhere with the prepuce. Now you see. So what we do here, phallopexy here, we create a permanent adhesion of this penile part with the prepucial mucosa. So what we do here, we uh, caudal to the prepucial opening about 2 to 2.5 centimeter caudal to this prepucial opening. We create an incision and open the prepucial mucosa. And after retracting the prepuce, we pull out the penis outside, and similarly we create one, remove one strip of the mucosa from the penile part of this penis and retract it back, and we put simple interrupted suture incorporating this prepucial mucosa and penile part of this mucosa. ठीक है, ये स्ट्रिप्स हटाने के बाद इसका जो प्रीप्यूस का म्यूकोसा है उसके साथ आप अटैच कर दो, तो ये क्या होगा, प्रीप्यूस के साथ यहीं पे अटैच रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा। इसको आप ये देखो, यदि मैं क्या करूं, यहाँ पे एक स्ट्रिप हटा दूं यहाँ से, और यहाँ से प्रीप्यूस, यहाँ का प्रीप्यूस को जो है डोर्सल पार्ट में यहाँ से अंदर से ओपनिंग करके अंदर का जो प्रीप्यूसल म्यूकोसा है उस वहाँ पे इंसाइज करके इसको पुल करके, और ये जो स्ट्रिप यहाँ बनाया म्यूकोसा को यहाँ पे पुल करके यहाँ स्टिच कर दो, तो क्या होगा, म्यूकोसा के साथ परमानेंट एडेशन हो जाएगा, एंड इट विल नॉट कम आउट परमानेंटली, it will remain adhere with the prepucial sheath and it will not come out from the prepuce. तो इसमें और कोई क्वेश्चन है? यस सर। बताइए। सर हमको सर इंसिजन जो पहले प्रीप्यूस सॉरी ये जो हमारे पास प्रीप्यूस की सीथ है इस पे लगाना है, फिर उसके बाद जो है सर ये जो साफ्ट है इसकी जो पिनाइल साफ्ट है उसके ऊपर भी सर इंसाइज करना है। यस, उसके बाद स्ट्रिप को हटाना है, आप फ्रेस करोगे ना, फ्रेस करोगे तभी तो एडहियर कर पाएगा। टिश्यू को फ्रेस करेंगे ना, आप हटाएंगे म्यूकोसा तभी तो म्यूकोसा यहाँ पे अटैच हो पाएगा। तो सर उसको बाद में नहीं करना पड़ेगा, सूचरिंग नहीं करना पड़ेगा सर बाद में? नहीं, वो जो ऑब्जर्वेबल सूचर करते हैं उसमें परमानेंट एडहेशन हो जाएगा, यहीं पे परमानेंट एडहेयर कर जाएगा। इन फ्यूचर में ये पेनल पार्ट कभी बाहर आ नहीं पाएगा, वो परमानेंट एडहेशन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपका ये सिचुएशन इस तरह का सिचुएशन रहेगा और हमेशा ये बाहर अगर पेनाइल पार्ट रहेगा, तो ड्यू टू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन से इन्फेक्शन होगा प्लस इंजुरी होगा, तो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए करना क्या है कि इफ दैट पर्टिकुलर एनिमल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग विद द मेडिसिन, ठीक है, समटाइम कुछ इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन होते हैं जिसमें भी इस तरह का पैराफिमोसिस की क्लिनिकल साइन सिम्टम दिखते हैं, बट वो चीज़ नहीं है। तो और इसके बाद अगर आप इस कंडीशन में प्रीप्यूस का लेंथ भी इंक्रीज करा करके ये सर्जरी करके भी आप इसको अंदर नहीं कर सकते हैं, इन दैट केसेस यू हैव टू डू परमानेंट फेलोपैक्स। ठीक है, सो दैट हेलो सर। हाँ सर हेलो सर। हाँ बोलिए सर इफ हेलो हाँ बोलिए, आप बोलो मुझे सर। इफ बी परमानेंटली adhere the penis from the prepuce, then Yes. How dog will copulate further? If we will using dog for breeding, then how will it copulate? This animal will never copulate. That is a compromise technique. ठीक है? Yes sir. वो हमने Okay, परमानेंट कर दिया।
दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज टेक। इसमें आप फ्यूचर में आपका ये डॉग ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। और कोई क्या एक क्वेश्चन कोई पूछ सर रही थी? हाँ बताइए। सर वो जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हम पैराफिमोसिस में अप्लाई कर रहे थे, यस, आप उस आप यस सर, इसके बारे में बात कर रहे हो? यस सर। हाँ हाँ बताइए। तो सर ये सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाता है क्या, इसकी वजह से हमें? एक्चुअली हमें हमारे पास क्या है ना कि अगर ये पेनिस इज प्रोट्रूडेड टू दिस मच लेंथ, ठीक है, यस सर, यस सर। तो हम पहले ट्राई करेंगे कि ये जो प्रीप्यूशियन लेंथनिंग करने के बाद ही ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्मेटिक लुक आ जाएगा, अंदर यस हो सर, जाएगा। लेकिन यदि इतना प्रोट्रूडेड हो तो हम प्रीप्यूस को कितना ऊपर पुल करके ला पाएंगे? नहीं, अगर ये टेक्निक हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, इस टेक्निक से यदि मैं नहीं कर पाता हूं, देन व्हाट वी डिसाइड, वी ultimately decide to perform phallopexy in this situation. ठीक है, फर्स्ट वी ट्राई विद दिस टेक्निक। इफ दिस टेक्निक इज गेट फेल, इसकी भी तो कोई लिमिटेशन है ना, आप स्किन को प्रीप्यूस को स्ट्रेच करके कहाँ तक ला सकते हैं?